निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने पाकिस्तान में इंतखाबात में हुकूमत की जानिब से मुदाखलत न करने का यकीन दिला दिया। CNN को इंटरव्यू में अनवर काकड़ का कहना था, इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। किसी ने मुदाखलत की कोशिश की तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया है। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। उनका कहना था कि पोलिंग की तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। To the audience which is listening to me at the moment, that there wouldn't be any institutional interference at the behest of the government of Pakistan in either favor or fear of any political group. If certain individuals or political parties or groups try to influence or engineer the process, that will not have any sort of organized backing by the government. If it happens, it would be responded and dealt with according to the law. I am confident at the moment because the reason is that this constitutional exercise of delimitation, if anyone applies common sense on the timeline, that how much is it required to achieve delimitation of all the constituencies, that probably would be around, let's say, a couple of months or 2, maximum 3. So if I see through that prism, I do appreciate and understand, and there is a timeline again for filing criticism on the formation of those new delimitations. So all the process could be at max between 3.5 to 4 months. And this is the kind of a tentative date which we are seeing that they are announcing. Every government appreciates and understands the value of relationship with the US. And so we are also continuing to cultivate that relationship, strengthen it further, and try to find more venues where we can bring the two nations more closer. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।